The international system was described as evolving order of autonomous political entities, स्वयंशासित political राजनीतिक entities currently centered on sovereign state. बर्तमान currently center sovereign माने जो सार्वभौम राष्ट्र who is interaction are governed by changing norm. Interaction टा जहाँ interaction govern होइथिला changing norm and नीति and institution that have been shifted dramatically change होइथिला shift होइथिला since peace of Westphalia 1648 होइथिला peace of Westphalia. Westphalian Treaty established the foundational principle of modern international relations. So modern international relation टा start होइथिला ये वेस्टफेलियन ट्रेटी जो सृष्टि होइथिला modern international relation जो international system which have since been challenged and adopted by major historical events. Since been challenged challenge होई and adopted by major historical event. International system short Westphalia the peace of Westphalia which ended hella devastating 30 years war in Europe 30 वर्ष युद्ध. Widely considered the birth of a modern state system. The modern state system which is evolved after 30 years of war, European wars, war in Europe, fundamentally altering the medieval political order. मध्ययुगीय political order टा change hella, dominated by the Holy Roman Empire and papacy. Fundamentally alter hella medieval change hella medieval political order टा जेटा dominated थिला by दबदबा थिला dominated by Holy Roman Empire. Roman Empire रो पर dominated थिला medieval political order टा मध्ययुगीय राजनीतिक sovereignty of state gained supreme authority पाइला state माने over their territory तांकर territory माने तांकर अंचल ऊपर and domestic affairs घरोई व्यापार free from external interference बाह्य external interference ରୁ free रहिबे. तापर territory integrity territory the concept of fixed internationally recognized border रहिबो. concept of fixed became central to state राज्य रू केंद्र राज्य पद identity and jurisdiction रहिबो. become central रू state पर्यंत to state identity रहिबो and jurisdiction रहिबो and external border टा fix हबो. internationally border concept of fixed व internationally recognized border fixed निर्दिष्ट internationally recognized border रहिबो. legally equality all state regardless of size of power सब राज्य से power size regardless of size of power all state regardless of size of power size अनुଯାयी were considered legally equal. all state regardless of size power legally equality पर रहिबो. regardless size of power छोटा हो कि बड़ा हो regardless size of or power अनुଯାयी और size अनुଯାयी regardless were considered legally equal in the international system. international system रे all state regardless power or size they are considered legally equal in the international system. non intervention a core principle intervention किछ रहइबनी. a core principle emerged that no state should interfere in the internal matters of another interfere कर परिबनी. secularization treaties diminished the political power of religious authorities. diminished कमाई देला the political power of राजनीतिक power अधिकार शक्ति. religious authority धार्मिक authority मानकर political power रहइबनी. allowing rulers to determine the religion allowing कला rulers मानक शासक जे रहइबे to determine the religion of their own realm shifting power to secular government. power टा shift करे केमती to secular government माने धार्मिक जो ये धर्मनिरपेक्ष सरकार को केमती power shift करियो. allowing rulers to determine करिवे the religion of their own realm प्रकृत power shifting to secular government. evolution of the international system 1848 to present
वेस्टफालियन मॉडल प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क कला फॉर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज परवर्ती किसी शताब्दी बट द सिस्टम हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन किंतु बट द सिस्टम टा अंडरगोन सिग्निफिकेंट गोटे निर्दिष्ट ट्रांसफॉर्मेशन माने परिवर्तन एज ऑफ इंपेरियलिज्म एंड बैलेंस ऑफ पावर एज ऑफ इंपेरियलिज्म साम्राज्यवाद एंड द बैलेंस ऑफ पावर यूरोपियन पावर एक्सपैंड कला देयर इन्फ्लुएंस ग्लोबली माने पूरा विश्व यूरोपियन पावर एक्सपोर्टिंग द स्टेट सिस्टम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कले द स्टेट सिस्टम वर्ल्ड वाइड थ्रू कॉलोनाइजेशन स्टेट सिस्टम वर्ल्ड वाइड माने विश्व सारा थ्रू कॉलोनाइजेशन द कांसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर became a primary mechanism. The concept of a balance of power balance concept became primary mechanism for maintaining stability स्थिरता मेंटेन करने among European state रे यूरोपियन पावर्स एक्सपांड कला देयर इन्फ्लुएंस ग्लोबली गला 70 कोटी थ्रू कॉलोनाइजेशन द्वारा ये जो उपनिवेशवाद The concept of balance of power became a primary power balance करिया पे primarily mechanism for maintaining stability among European state मध्य balance of power टा became primary mechanism मुख्य mechanism to maintain stability स्थिरता among European state aiming to prevent any single state प्रतिरोध करिया पे any single state from achieving dominance prevent प्रतिरोध करिवे and any single state from achieving dominance दबदबा अचीव करि पाया पे prevent करिवे any single state world wars and rise of international organization age of imperialism and balance of power यूरोपियन से कॉलोनाइजेशन कला concept of balance of power होची became a primary mechanism रहिला for maintaining stability पावर को बैलेंस करिया सब स्टेट अमंग मध्य अमंग ऑल द स्टेट ऑफ द यूरोप ऑल द कंट्री बिफोर कंट्री एज नॉट स्टेट बैलेंस ऑफ पावर बिकम प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी स्थिरता अमंग यूरोपियन स्टेट मध्य एमिंग टू प्रिवेंट एनी सिंगल स्टेट प्रतिरोध करिया अचीविंग डोमिनेंस वर्ल्ड वार 1 हला एक्जिस्टिंग वर्ल्ड वार 1 शैटर्ड द एक्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ पावर वर्ल्ड वार 1 टा बैलेंस ऑफ पावर टा बैलेंस कला लीडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन प्रथमे लीग ऑफ नेशन हला एस्टैब्लिश द फर्स्ट ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होची प्रथम ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन माने सब सरकार भीतर गोटे ऑर्गेनाइजेशन हला लीग ऑफ नेशन हला लीग ऑफ नेशन हला आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट ग्लोबल एम्ड एट कलेक्टिव सिक्योरिटी माने संगठित सिक्योरिटी आफ्टर वर्ल्ड वार 2 द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड हला एंड इट्स चार्टर एनश्राइंड ए वर्जन ऑफ वेस्टफालियन सॉवरेनिटी ई चार्टर टा डेवलप कला वेस्टफालियन वर्जन ऑफ वेस्टफालियन सॉवरेनिटी सार्वभौमत्व व्हाइल क्रिएटिंग ए फोरम फॉर फ्रेम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंतर्जातीय कोऑपरेशन पाई द कोल्ड वार एंड बायोपोलारिटी 1945-1991 हला कोन वर्ल्ड वार शिफ्टेड टू बाइपोलर स्ट्रक्चर विथ यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन emerging कले as two super powers emerging with competing ideologies लड़ाई कले आइडियोलॉजीज कम्पीट कले but Soviet Union emerging two superpowers. The era was characterized by proxy wars, शीतल युद्ध, छद्म युद्ध, proxy war, and proxy war. The nuclear arms race, nuclear weapons, nuclear arms race चला, and the formation of military alliance like NATO and Warsaw Pact. NATO led by America and Warsaw Pact led by Russia. Decolonization during the period माने औपनिवेशिक हटिला during the period समय रे
led to a wave of a newly independent state. Decolonization of powerଟା decolonize ହେଲା. Decolonization during this period led to a wave of newly independent states ସବୁ wave ହେଲା ମାନେ ଆସିଲା wave of newly independent state in Asia and Africa expanding kala international system members post Cold War ପରେ globalization 1991 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲା. Post the dissolution of the Soviet Union ଭାଙ୍ଗିଲା led to unipolar movement ହେଇଗଲା ବିଶ୍ୱଟା with the US and the sole superpower. US ହେଉଛି as the sole superpower ଗୋଟିଏ bipolar ତାପରେ unipolar movement. This period accelerated globalization को accelerate ବଢ଼େଇଲା. Engaging economic and cultural independence सांस्कृतिक interdependence भाव विनिमय and leading to the rise of a powerful non-state actors. Example ହେଉଛି powerful ସବୁ non-state ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବିହୀନ actors, NGO, terrorist group, multinational corporation ଏରା ସବୁ powerful non-state actor. state ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ powerful ରହିଲେ. NGO, terrorist group, multinational corporation. Contemporary challenges. Today the international system faces complex transnational challenges like climate change, migration, cyber security. सब climate change, migration, स्थानांतरित cyber security रहिला. Climate change often transcend that borders are challenge the limit of absolute state. System faces complex transnational देश बाहर transnational challenges like climate change, migration, beyond the border बाहर जो challenges and cyber security जो threat that often transcend state border. Stress border बाहर भी threat to country and challenge the limits of absolute state. limit जो absolute state जो sovereign state limit को challenge करुचे. Sovereignty को concept like humanitarian intervention are responsible to protect have emerged, sparking debate over whether a traditional non-intervention पारंपरिक जो non-intervention थिला principle are still fully applicable in the face of mass human right abuses. Traditional